in the last session, we had discussed the central tendency. Okay. Now we will be going forward with the next basically concept. Okay. And that is what exactly we discussed in the statistical basically data analytics side. Can anybody help me out with that? Yes, ma'am. Yeah. What was that? Ma'am, we were studying about central tendency and mean, median, mode, and mean, if, and if formula as well. Right. Like After we that, covered overall central tendency. right. And then the next topic which we are going to cover, that is the data analytics side. Like, so today we will be discussing about more detailed part of the correlation, then going forward with the regression. If time permits, we will also touch up with the distributions and histograms. Okay. Histograms are nothing, they are the charts. Okay. So they are very easy to understand and quickly we can have it. Distributions are need to understand more detailedly because distribution is how your data is being distributed. So that is we are going to discuss in much detail. So let's start with the correlation. Okay. And where we will use a correlation, can anybody tell me where we are going to use a correlation? Correlations normally used with the basically data analytics when there are two parameters and we want to correlate it. Okay. So let's first talk about a correlation and then we will go into the Excel side to implement correlation. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, so in the Excel, we are using Excel as a tool for data analytics, and we are implementing the correlation for the data analytics. Now, what exactly the correlation means? So that I am going to explain you step by step. Uh, so in the mathematical basically representation, correlation is being identified, or we can say there we called as a Pearson correlation coefficient. Okay, so in the statistical terminology, I'm just first talk about. So what exactly as per the Pearson correlation coefficient means, anybody is aware about it who is already from the mathematical background, or maybe they had learned or they had gone through any kind of basically syllabus where they had understood this correlation in general. Yeah. Ma'am, like it is the range is like -3, like -1, 0, and 1. And if it is like 1, it is like strongly correlated. And if it is -1, it is very poorly correlated. And 0 is the in between, is like that. Hmm. But I'm asking you the correlation. What is the concept of correlation? I'm asking here. Relation between two My variables. question is, what is correlation? See, you are. Correlation is Yeah. it is a generally in correlation we measure how one variable change affect the another variable. So basically, as per Pearson, what exactly it is? Yeah. Man, can you repeat the question? See, what exactly, basically, you said your completely correct answer. Okay, there is no as such confusion with the answer. I want what exactly the correlation means. You said Ma'am, it can relation, be yeah, relation between two parameters. That completely right answer. Can you elaborate more into the statistical terminologies? okay. So it can be it describe the strength between two variable. Like if the value of one variable is increasing, then how it affect the another value. Like Huh. if one is increasing, then the another is also increasing. It can be called positive correlation, and if one is increasing and another is decreasing, it is negative correlation. Okay. And what are the basically where the situation where we will be going with the correlation? Ma'am, Hmm. we can relate the training we provide in office and then the whatever job they are doing. Like we can correlate these terms in, as
I'm talking about in office, like if someone is, if someone is giving a training in to an employee, and then analyzing it with the job performance, that how are they going? Like we can correlate with these two terms. Okay. Basically, when we talk about a correlation, and when we normally use a correlation into the data analytics, we normally use a correlation approach, that is a Pearson correlation approach. Okay. So that is one of the important thing we need to be very careful about it. Now, what does Pearson correlation means? So as per Pearson correlation, there is a R. Okay. So R is nothing, it's a coefficient, correlation coefficient. Okay. It's mostly widely used basically approach. Okay. Correlation approach. Now, what exactly it is, this R is, so as you said, R, somebody at the very beginning said R minus 1 plus 1 0. That range is nothing, it's a R. Okay. So always remember, the coefficient is coming into format of R, and that R is nothing, 1, ranges from -1 to 1. Okay. And based on that value, we will state our conclusion as a data analyst, that it is positively correlated or negatively correlated or no correlation. Okay. So now correlation, when the terminology itself says that it is related with between two things. Okay. Correlated. Okay. So when there are two parameters, okay, when there are two parameters, then we will be going with the correlation to check that parameter dependencies, whether they are associated with each other, one parameter is depend on another, okay, and how it is oriented. So that is basically the correlation means. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, if I just draw a few things here, okay, so I already having a basically graph with me. So when we are having, see, this these are the three diagrams, okay. If you observe here, there is a one first correlation, that's a positive correlation. Why? Because if I just consider this way, okay, if I just consider this way, if this is my x-axis or this is my y-axis, whichever you take, okay, and some values are increasing, and accordingly y is also increasing, right? So as per this graph, what we understood, suppose if any correlated example you can consider, okay, so demand is increased, so like sell is increased, okay, or what I say, it's a demand and supply kind of relation, you can have it, any example you can have it. So moreover, you will find that it is into the both the things are increasing order. So we can draw a line, and based on that line, maximum basically points are need to be covered. So it is a positive correlation. Okay, so this is a graphical representation. Okay, this is a graphical representation of correlation. If you draw this thing, two parameters with the graph, okay, in your Excel or maybe in the Power BI, you will get similar kind of basically representation only. Okay, this representation is a just for understanding. Okay, now negative correlation, what does it mean? If something is getting increased, see, if you just consider this is my X and this is my Y again, so this is basically increasing, right? This is increasing, but Y is, whereas it is decreasing. So if this land, if you just look into this line or a slope, you will see this is a just opposite slope, right? So one is increasing, another is a decreasing. Okay, so that's a negative correlation. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, Negative ma'am. correlation means it is towards -1. Okay, so whatever be the value we are getting, it is towards -1 when it comes to negative correlation. When it is a positive correlation, it is towards 1. But that 0.5 is also positive correlation. 0.75 is also the positive correlation. 0.85 is also the positive correlation. So whatever be the value we will get it is always towards 1. Okay. But if suppose something like some value, some data, like we are going to talk about a data set also.
So we will practice it. Don't worry about it. First, understand the concept. Suppose some value of the correlation, you will get it into the negative value. Okay, say some minus something. Okay, so that is negative correlation. Okay, so whichever is towards negative side, it is a negative correlation. Whichever is towards positive side, it is a basically towards one side, it is a positive correlation. And exact अगर कभी किसी का one as a output आता है, okay, so that's it's a strongly correlated, okay, strongly correlated, like that it is, okay. And if there is no relation, what does it mean? Then there is a scattered graph. We are not finding a best possible thing out of it. So that's a no correlation, means there is no relation between the two variables, okay. Now we will see how it is being basically, or what I say, how it is being, we will talk about that into the statistical way. So if a correlation is a measure, basically it's a measure, okay, of a linear relationship between two variables, okay. So I would prefer to write it down into the notes file. That would be better for us. So you can refer it afterwards as well, right? So I started this 4th October, and what is this? This is my 23rd October. So this was the last file I had prepared for the Excel time, right? So we are talking about a correlation, right? Okay, so what is this in the stats? Correlation is a measure of the linear relationship between two variables. Now, those variables can any variable, okay? As I said, if there is a, like if your height and weight, you can consider age and height, you can consider number of hours you study and you secured marks, you can consider how many hours your screen time is and what is your capacity of eye or quality of vision is. So all that is the variables, okay? And you will be finding certain relationship on it, okay? So the value for correlation coefficient is always in between. In between what? In between -1 to +1. Okay. And when, if it is, see, if you just know the scale, basic scale, mathematical scale, if you just know that scale, in -1 to 1, there is a 0. Do you know that? In -1, in -1, if you just go and then you will find a 0 and then again a 1 here, okay. So this 0, what does it represent? Can you just tell me? -1 matlab negative correlation, +1 matlab positive correlation, strongly correlated, whereas 0 means No relation. exactly. So 0 means there is no relation between the variables which you had taken, okay. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I'm not giving much more thing here. Let's talk about certain example with the correlation. Okay, so certain scenario we will discuss right now. Okay, so let's say correlation value can help us in the sense helps businesses to evaluate impact of specific actions. Okay, so we will see certain scenarios, use cases, and based on certain data set or dummy data set, we will evaluate it using Excel. Okay, so as I said, correlation. What I said, correlation values can help businesses evaluate the impact of specific actions on other actions. Can anybody frame any example? किसी के पास कुछ एग्जाम्पल है इसके रिलेटेड? I'll take an example.
For Uh, example, yeah. Ma'am, between like the products and the number of products sold. I want two variables, no? No, ma'am. Like can like the products and the number of products sold cannot be example. No, I no. It cannot be a correlation, basically analysis. I'll take a one example. I'll frame my example. Let's say okay. companies may find that spending money, okay, spending on social media marketing increases. So does the customer engagement increases, indicating that more spending might make sense? See, you have to think in the business oriented way, okay? अगर मेरा कंपनी है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, अगर एक किसी भी चीज का कंपनी, लेट्स से एनी एग्जांपल यू पिक्ड अप, ओके, सपोज अगर मैं मेरे मेरे प्रोडक्ट के ऊपर अगर मैं सोशल मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च कर रही हूँ, तो क्या मेरे कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ेंगे क्या? विल इट? तो स्पेंडिंग मनी इज रियली मेक सेंस जब मुझे ऐसी सिचुएशन को एनालिसिस करना है, तब मैं क्या यूज करूंगी? कोरिलेशन यूज करूंगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? I'll first jot down the case study. Companies may find that spending on social media marketing increases, so does customer engagement, indicating that more spending might make sense. अभी क्लियर हुआ क्या पूछ रही हूं मैं? Here I will get two parameters straight away. I will get two parameters. If I am spending, say, अगर मेरी हर चौथे पोस्ट के बाद अगर इफ आई एम हाईलाइटिंग माय पोस्ट, ओके, आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, यू हैड सीन लिंक्डइन आल्सो, so all these platforms are basically promoting the basically social engagement, okay? So if I just take a two parameters, okay, so the variable one here, what is the variable one here? क्या है मेरा variable one? Investment, spending money na, money on social media, right? And variable two, what I will get it? I will get a certain count, customer engagement. मिलेगा मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल. Am I Yes, audible? ma'am. Yes, ma'am. Okay, let's say एक पर्टिकुलर, मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल अगर लेती हूँ कि मंथ मैं अगर अक्टूबर से स्टार्ट करती हूँ, ओके, अक्टूबर 24 में मैंने स्पेंड किया है, मान लो अक्टूबर 24 से ना लेते हुए हम ऐसा वैल्यू, एक डेटा अभी क्रिएट करना है आपको. आई एम गोइंग टू गिव यू नेक्स्ट 5 मिनट्स, ओके? सो लेट्स से जैन, ओके, जैन 24 में मैंने स्पेंड किया, समझ लो मैंने स्पेंड किया सोशल मीडिया प्रमोशंस और डिजिटल मार्केटिंग पे 70,000, ओके? और मेरे कस्टमर्स, मुझे नए कस्टमर्स, ऑर्गेनिक लीड जनरेट हो रहे हैं या लीड जनरेट हो रहे हैं, सो मान लो मेरे एवरी इसके क्लिक्स पे और ये सब रफली टोटल मिला के मेरे लीड जनरेट हो रहे हैं कुछ 230, ओके? फिर मैंने जैन के बाद मैंने फेब में, मान लो कि फेब में मैंने कुछ ज्यादा स्पेंड नहीं किया, आई जस्ट स्पेंड ओनली से 40K, ओके? और मेरे लीड जनरेट हुए मान लो कुछ 400, okay, that's possible. March 24 I had also invested some 90,000 and I got a
pretty good leads here, 650. Okay, then I am going with this. Okay, and again in the April month I spend it. I found that मार्च में अच्छा हुआ है और अभी नया ईयर स्टार्ट हुआ, so I decided कि मैं थोड़ा सा ज्यादा बजट बढ़ा दूं, and then I spent it 1,20,000, and but I got unfortunately leads are less. Okay, maybe any reason. Okay, then I am getting May. Again, I decide, okay, it's better to spend 1 lakh only. And I got it somewhere around 450 leads. Then June. Okay, अब आपका वैल्यू लो. Okay, जून जुलाई और ऐसे पूरे 12 मंथ्स का ये एक टेबल क्रिएट करो एक्सेल में क्विकली. Do it fast. And somebody had to share the screen, or else I can do it from my end, not an issue, but do Ma'am, it like, fast. excuse me, ma'am. Ma'am, Yeah. like, for both variable one and okay, so like it's month wise, that customer engagement is how much and spending money is how much? Exactly. So I just Okay. want a simple table like this. Okay, I'll just show Okay. you. 1 second. मैं यहाँ पे एक टेबल बना रही हूँ. मैंने how much spend I will spend on the basically on social media. Okay, and my engagement, or I can say return on investment. Whatever you use it, I got a customer, okay, or leads, whatever maybe, or customer engagements. और यहाँ पे ये टेबल मुझे बना के चाहिए है like this only. Okay, so year wise चाहिए है. So you can also take one more column if you want. Okay, otherwise this is also enough to just start with. So I just have a 70K, some value I had taken 230, then I had taken some value as a 40,000, and then I get some good pretty amount as a 400, then I got 90,000. अब जो भी चाहिए आप लो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि इतना ही So ma'am, लेना है. like, we have to create it manually only, right? Yes, right now we are just doing some dummy data set. Okay. Okay. And ma'am, like month wise. Okay. Yeah. So 12 महीने का चाहिए मुझे. And like any values, like any random values. Yeah, any random 1,20,000 जैसे मैंने लिया है वैसे. हर महीने का मेरा बजट अलग अलग रहेगा. Are you understanding now what I am saying right now here? कुछ भी वैल्यू लो आप आपके हिसाब से. मैंने यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू ले लिया है. Done with the data set. अभी स्टेप्स देख लो. Okay, so there are 2 steps to use basically either not 2, we can have a 4 easy ways to have a correlation on the Excel. Okay, so यहाँ पे मैंने Excel का बना लिया है, and then this is a small data set I created. Okay, January, February, March, April, May, June, July. I'll just take it August also. And then I will have a 80,000 for the next month. See, and then again I decided to spend more. I got 750 like this. Okay, so this is some values I created here just for I am spending money on the social media marketing and customer engagement. So there are 2 parameters I am considering here, and on the basis of this 2 I will be looking forward कि ये जो मैं promote कर रही हूँ, या ये जो मेरा product है, या ये जो मेरा camping है, या जो भी मैं किसी भी services के लिए promotion कर रही हूँ through the social media marketing, it's really in the right direction or not. Okay, so whether they are correlated or not. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. So let's start with the basically correlation coefficient, or I would say the correlation. Okay, so in the Excel there are 4 ways. Okay, so the using method data analysis toolpad for the data analysis. So we had already enabled in the last session only
that data analytics tool pack from the add-ins. Okay, किसी को कोई doubt है? Last time मैंने already बताया हुआ है. If anybody is having doubt, I will just explain you again. You just go to the option, okay, get into the basically add-ins. Okay, after add-ins, then go to the manage Excel add-ins and then just click on the go. Okay, you have to enable this and analysis tool pack from this option add-ins. Is it clear? Yes, ma'am. Is this clear now? Okay, so we had already taken the tool pack. Now step number 1. So there are many ways to correlation regression. We can have it in the Excel. So the very first we are having method 1 using data analysis tool pack for the data analysis correlation in the Excel. Okay, so this is the first thing we are doing right now. Ma'am, I don't know why somebody is removing me all the time. I don't know why this is showing me the host is removing me. I mean, this is the 5 times it happened. The host is removing me. Why? I mean, is this any kind of default setting has been done? Once again, I am not host. I need to check. Okay. Once again. Who is facing problem? I'm ma'am, Shri. Okay. Shri, can you just connect? Yeah. Second now. I don't know like who is host ideally. I'm not host, so I'm not actually doing this because once I share the screen, I am on my own screen, so I never basically look into the background side. Yes, ma'am. I don't know who is the host here. Okay. Ma'am, actually, the Stuintern technology is the host. Okay. So kindly just check with the sir. Anyway, we will do one thing. Yeah, okay. Right now you are basically you are able to see my screen, right? Yes, ma'am. Yes. Okay, so let's talk about that first, and then if suppose still if you just find difficulty, the next time you directly chat with Stu Valley Technology personally in the chat and just discuss. Okay. Okay, fine. So we will be having data analysis. So we just go to the option data. Okay. See, if somebody is facing problem to recognize the steps, okay, जिन लोगों को steps याद नहीं रहती है या जो पहली बार एक्सेल में काम कर रहे हैं या सभी के लिए इन जनरल बोल रही हूँ, अगर आप स्टेप्स लिख लोगे तो बेहतर रहेगा. ओके, वो आपको ही याद रखे, आपके लिए ही बेटर रहेगा. सो समवेयर इन द नोटपैड और समवेयर इन योर एक्सेल कहीं आप स्टेप लिख लो. ओके, सो स्टेप नंबर 1 व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्लिकिंग ऑन द डेटा ऑप्शन. ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन द डेटा. If you just click on the data, you will see there is a, I'm just copying it, okay, on our notes file so that it will be easy for me also. So this is a step number 1. Okay, what is the step number 1? Data. I'm just clicking on the data. After that, you will see there is a data analysis option. So you will find the data analysis option here. Are you understanding now what I'm doing? This is just a screenshot I am taking for your reference. Okay, अगर आप लिखना पसंद करते हो तो that's the best part. किसी किसी को ऐसा रहता है कि नहीं लिखना है, तो मैं उनके लिए बस Ma'am, I'm writing. I'm just highlighting so that everybody get understood this. Okay.
And then what we are having, the next thing, we are just going with the data analysis option. Click on it. Okay. Once you click it, you will find this option. This is a complete data analysis option. You will get it. So that will be the step number 3. Okay. You will see this window. Okay. Now in this window, what you are supposed to do? We are going back to here. Okay. So there is an option correlation. There is an option correlation. Okay. So what exactly this is? The correlation is the Pearson correlation coefficient, which is the most commonly used. Okay. So कोई सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि देखो देर आर 2-3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. ओके, जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के होंगे या जिन्होंने कभी स्टैटिस्टिक्स बहुत डिटेल में कभी पढ़ाई करी होगी तो उनको भी पता होगा. देर आर मेनी एक्चुअली. Pearson is one of the most common and popularly used correlation. Okay. So this is a correlation I had taken. Then you will see this screen. Okay. So what is the screen is basically? So जो हम correlation use करते हैं उसमें हम parameters दे रहे हैं, right? We are giving the parameters. Step, what is the step will be? This is the step 4, right? And this is I am pasting here. Okay. Now if you see here, what is the input range? What does it mean input range? Ma'am, I guess we can like select the table and it will give us the whole range. Exactly. मतलब हम दो पैरामीटर्स को सिलेक्ट करेंगे. मतलब दो हम इसलिए दो देंगे क्योंकि ऑब्वियसली कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं ना हम, कोरिलेशन कोरिलेट कर रहे हैं, तो हमको दो पैरामीटर्स देने ही पड़ेंगे. मतलब वो इनपुट देना पड़ेगा, right? So we will be selecting it. Okay, either we can select it like by just typing it or we can just have it like this. ये range select करी मैंने. Okay. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, actually, in the 2019 version, the direct option for data analysis is not available. It is finished till outline only. आपने पैक इंस्टॉल किया क्या? Yes, ma'am, I have installed that toolback in the which you have installed in the previous class. हाँ, फिर तो भी नहीं आ रहा है. No, मैम ma'am. एक्चुअली ये सीन मेरे साथ भी था, लेकिन मैं अभी जो फाइल खोली उसमें फिर से मैंने ऐड इन किया तो वो आ रहा है. तो कृष्णम आपका फिर से इसमें आप करोगे ना तो वो आ जाएगा, क्योंकि वो प्रीवियस वाले फाइल में किया था, अभी आपको फिर से करना पड़ेगा. Okay, okay, okay. Thank you so much. Okay, now we will be just creating. अभी आउटपुट रेंज मुझे क्या चाहिए? आउटपुट रेंज मतलब मुझे कहाँ पे आउटपुट दिखाना है. ओके, so you can select any basically range here. So any range you can have it here like this. Okay, मतलब यहाँ पे मुझे आउटपुट दिखाना है. So this is what is the output range. Okay. So ma'am, like the output range will be the blank area, right? Exactly. We'll select the blank space. Okay. Right. आप इधर इन द न्यू वर्कशीट दिखा सकते हो, न्यू वर्कबुक खोल के दिखा सकते हो, लेकिन हमको वही दिखाना है. सो वी आर जस्ट सिलेक्टिंग दैट. ओके, एंड जस्ट क्लिकिंग ऑन ओके. So once I click on OK, I will get this complete values here. Okay. अगर मुझे चाहिए है कि मैं labels भी add करूं. Okay. Suppose I just want to take a labels. Okay. So I'm just removing this. Okay. I again going back. I'm just taking a correlation. Okay. I want a label also. Okay. So I will be taking a first label like this. Okay. Suppose I want to take a label from this. तो मुझे यहाँ से select करना पड़ेगा. Okay. Are you able to understand what I am saying right now? Ma'am, I couldn't understand the interpretation of the output. Like, Yeah, I'm going to explain because अभी तक मैंने explain ही नहीं किया है. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, can you please repeat the steps from data analysis? I have just got the option now. Okay, fine. So you just click on the data analysis tool pack. Okay, यहाँ से आपने क्लिक किया. क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो दिखेगा. Okay, वहां पे आपको correlation सर्च करना है. You have to select the correlation and click on the OK option. Okay.
आप जब ओके क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे ब्लैंक होगा, राइट? इनपुट रेंज ब्लैंक होगा। इनपुट रेंज मतलब क्या, कि आप कौन से दो पैरामीटर्स पे कोरिलेशन अप्लाई करना चाह रहे हो। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। तो कौन से कर रहे हैं हम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, राइट? यस मैम। अभी मेरे इसमें ये दिखेगा नहीं आपको, बट व्हाट वी आर एक्चुअली टेकिंग, वी आर टेकिंग दिस टू थिंग्स, राइट? तो आपको ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू सिलेक्ट इट जस्ट एज इट इज। आप जैसे सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली वहां पे इनपुट रेंज जनरेट हो जाएगा, जैसे मेरे इसमें दिखाई दे रहा है अभी, ऐसे सेम इसमें। Oh, ma'am, I have taken the year also, the हाँ, third column. So ठीक है। I तो have to, आपको ईयर अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। okay, ma'am. ठीक है। अब उसके बाद जो जनरेट होगा आपका, वो इस तरीके से कुछ रिजल्ट जनरेट हो रहा है, राइट? अब यहाँ पे ये जो कॉलम है, ओके, वन सेकेंड, अब ये जो कॉलम है, ये एक्चुअली कॉलम क्या है पता है आपको? ये है स्पेंड ऑन मनी, ओके, और ये है हमारा customer engagement. Same here, spend on money and the customer engagement. Okay, this is what is two columns we got here. Okay, अब यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? आई एम एक्चुअली गेटिंग द आर। आर मतलब जो मैंने आपको बताया था ना, द पियर्सन कोएफिशिएंट, ये मुझे मिल रहा है 0.70 जो भी है। मैं पहले के तीन वैल्यूज यहाँ पे लिख लूंगी। सो दिस इज माई कोरिलेशन कोएफिशिएंट। Excuse me, ma'am, like for like out of the four boxes, we are not getting any value for the column 2 first place. So like, why is that? That's a representation actually. That's a representation. Okay, ma'am. ओके, ये ऐसे रिप्रेजेंट करके आपको वैल्यू दे रहा है। ओके, कॉलम वन इज नथिंग, इट्स योर स्पेंडिंग सोशल मीडिया। कॉलम टू इज नथिंग, इट्स योर कस्टमर एंगेजमेंट। सेम ईयर कॉलम वन इज नथिंग, इट्स योर स्पेंडिंग। बेसिकली यू कैन पुट इट लाइक दिस, पॉसिबल, आप ऐसे कर सकते हो। समझे आपको क्या करा मैंने अभी? Ma'am, the input range here is these two columns. हम्म। Okay, ma'am. और यहाँ पे आपको क्या मिला? ये कोएफिशिएंट मिला। अब इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि स्पेंडिंग मनी ऑन योर सोशल मीडिया इज Ma'am, एक्चुअली मेकिंग, it is positively strongly correlated as this value is close to 1. एग्जैक्टली। सो दिस इज बेसिकली लाइक अगर मैं अगले साल का बजट डिसाइड कर रही हूँ, या अगले साल अगर इफ आई एम जस्ट प्लानिंग कि मुझे अगले साल कितना एक टारगेट एस्टेब्लिश करना है, तो आई कैन गिव मोर प्रेफरेंस टू द सोशल मीडिया इन स्पेंडिंग मनी, because it is giving me the positive correlation. Is this clear to you now? Is it clear or not clear? Ma'am, could you please just calculate this regression once again, like this, sorry, this Not correlation once regression, again. this is correlation. Yes, ma'am, correlation once again. Just from the selecting of the tables and like putting the value, that's it. Okay, fine. I will be just again doing it. One second now. See, if I just go correlation, and already selected. So once it is being selected, it is not going to be changed, but I will just try to again do it like this. Okay. So this is my input range. Yes, ma'am. Output Yes, ma'am. range आप कहीं पे भी Output select range, कर we'll just choose any blank yeah, space. where you want to show that. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, you are saying about labels in first row. What is this, ma'am? आपको अगर ये आपने लेबल्स करे हैं, मतलब यू हैव टू मेक इट अ लेबल फर्स्ट, ओके, एंड देन यू नीड टू बी लाइक, फॉर एग्जांपल आई जस्ट शो यू। यहाँ पे अगर आपने एक और इंसर्ट किया कॉलम, ओके,
एंड यहाँ पे आपने कुछ लिया और भी, मतलब जोन वाइज कर लिया, जो भी करा, मतलब यहाँ पे आपने कुछ ना, सम वैल्यूज यू हैड टेकन, ओके, ABCD जो भी है, कैंपेन पे लिया, उसके बाद आपने प्रमोशन कैंपेन पे डाला, एड पे डाला, और जो भी 4-5 चीजें और आप ऐड कर लो यहाँ कैटेगरीज, एंड देन यू कैन हैव इट, ओके। और ये जो लेबल्स है ना, ये आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, फर्स्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे वो। ओके मैम। ओके, अभी ये एक तरीका हुआ, ठीक है। एक दूसरा भी तरीका होता है जिसमें हम यूज करते हैं कोरेल फंक्शन। वी कैन यूज अ कोरेल फंक्शन। अब जो कोरेल फंक्शन होता है ना, वो कैलकुलेट करना पड़ता है, ओके। अब आइडियली जिसने कभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा उसको पता है कि कोरिलेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मैं ना यहाँ पे आई एम नॉट एबल टू डू दिस, I'll be opening this because I need certain things to start with, okay? So what exactly the correlation coefficient का मतलब कैसे होता है कि आप जब कोई भी R मतलब आपका correlation coefficient आप जब कैलकुलेट करते हो, तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है पता है क्या? आपको समेशन ऑफ योर एक्स एंड वाई, मतलब जो आपने दो वैल्यूज लिया अभी, स्पेंडिंग मनी ऑन माई सोशल मीडिया और लीड्स जनरेटेड, उसको मुझे समेशन करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब समझ रहे हो मैं क्या कर रही हूँ? इंटरनली ऐसे होगा, होता भी है यही। और फिर समेशन ऑफ एक्स सेपरेटली लूंगी मैं, समेशन ऑफ वाई सेपरेटली लूंगी मैं। ये ऐसे हर एक के लिए टेबल जनरेट करना पड़ेगा। प्लस इज डिवाइडेड बाय कंप्लीट अंडर रूट ऑफ, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ एन। एन मतलब नंबर ऑफ काउंट, अगर जैसे 10 है, 12 है, जैसे अभी हमने साल भर का लिया तो 12 आएंगे। अगर हमने 5 साल का लिया तो दैट विल बी 12 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट विल बी 60। तो ऐसा एन रहेगा, ये मेरे नंबर ऑफ काउंट्स, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है। ये थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को टेक्निकल लगेगा, लेकिन मैं आपको जस्ट बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक और तरीका है ये सॉल्व करने का। पर मेरे हिसाब से लाइक दिस इज द बेस्ट वन विच आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द डिटेल। Ma'am, and this will give the three answers only, na? 0, -1, and 1. एग्जैक्टली आर तो वही मिलना है, आर का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जैसे एक्स जो है ना, अभी मेरा एक्स है, मेरा कितना मैंने पैसा स्पेंड किया, राइट? दिस इज माय स्पेंडिंग मनी, ओके। सो आई जस्ट मेक इट अ स्पेंडिंग मनी एस पे डी हियर, ओके। एंड वाई इज नथिंग, इज माय कस्टमर, हाउ मेनी कस्टमर्स आई गॉट इट। इज इट क्लियर नाउ? Ma'am, what is the difference between the x square and minus the whole under bracket then is square? Is there any difference? X ये square, X square in X square, like for example, we have values 2, 4, and 8. So like in it, we'll first take out the square of each individual value, like 2 ka 4, 4 ka 16, and 8 ka 64, and then we'll add those value. Whereas summation X whole square, it will be like 2 plus 4 plus 8, which is 14, and then 14 whole square. Okay, okay, okay. Thank you. So this way we are going to have it this x का और y square फिर यहाँ पे, और ये इंडिविजुअल हर एक का कॉलम वाइज होगा, पता है क्या? ये सब कॉलम वाइज चलेगा, क्योंकि ये दो वैल्यूज है ना यहाँ पे, आप समझ रहे हो? यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे आपका y है, फिर निकलेगा एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम डूइंग हियर? देन Yes, निकलेगा वाई स्क्वायर, yes, एंड देन ma'am. Yes. निकलेगा ये सब पूरा एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, और ये सब पूरा निकलेगा। Yes, So it ma'am. will be actually a complete big table format, and then we will be calculating on paper। ऐसे ही होता है। जब अगर हम दूसरा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो the way I am actually trying to explain here, the one is we did it with the help of data analysis, second we can do it with the help of one function, we call that function, क्या बोला था मैंने, कौन सा फंक्शन बोला था मैंने? Corel function. Ma'am, Corel. Right. So the another one is using Corel function. But Corel function को use करते टाइम हमको, how we can use that Corel function, हमको निकालना पड़ता है rank, okay, dot avj average, और average of what, ये पूरा उसका रेंज लेना पड़ेगा हमको, okay, average of range। what is my range here? तो मेरा रेंज पहले मैं लूंगी ये रेंज आया मेरा,
समझे आपको? क्योंकि हम यही निकाल रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, बट वी विल बी यूजिंग विद द हेल्प ऑफ फंक्शन. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, फिर यहां पे मैंने एंटर मारा, so this will be, and then reference order. Okay, I just forget to add the reference order as well. And what is my reference order here? After that, what is the reference order? ये तो हुआ, this will be my reference order. Okay. Excuse me, ma'am. Ma'am, what does like reference order mean? Like number, comma, reference, comma, order. मतलब एक ऑर्डर, मतलब जो एक ऑर्डर, सी द कलेक्शन बेसिकली, एन कितना है आपका, दैट वी आर सिलेक्टिंग हियर अप टू C12 तक. Okay, ma'am. ओके, सो इस तरीके से ये टेबल फॉर्मेट बनते जाएगा. लाइक वी विल बी हैविंग दिस, वन सेकेंड, हमको यहाँ पे रेफरेंस ऑर्डर ये ना लेते हुए हमको एक यहाँ पे क्रिएट करना है. सो वी विल बी सिलेक्टिंग दिस वे. ओके, और फिर यहाँ पे हम एंटर करेंगे. Why the value we are getting? यहाँ पे आएगा हमारा, मान लो यहाँ पे हमने एक एस नाम का वेरिएबल लिया, और यहाँ पे लिया हमने सी नाम का वेरिएबल. ओके, अब जो कोरल फंक्शन है वो किस तरीके से वर्क करता है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फर्स्ट. ओके, सो सबसे पहले जो फॉर्मूला है, ओके, हम वो सबसे पहले कहाँ एंटर करेंगे, ये नए सेल में एंटर करेंगे यहाँ पे. ओके, सो क्या फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे कोरल का, स्टार्ट कोरल फॉर्मूला बाद में आएगा, सबसे पहले उसका हमको ये रैंक वाला फॉर्मूला से पहले रैंक एवरेज यूज करना पड़ेगा. ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगी दिस वैल्यू C5. One second, not C5, I'm just taking this, एक वैल्यू लिया, ठीक है. उसके बाद आई विल बी टेकिंग रेफरेंस, उसका रेफरेंस क्या आएगा, यही आएगा, राइट. एंड देन आई विल Ma'am, reference will be not the 230. नो हम this is a formula, actually we will be using the formula. okay, so formula में क्या जाएगा कि किसके ऊपर निकाल रहे, कौन सी वैल्यू पे निकाल रहे, दैट वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग. Ma'am, so the reference is the variable for what we are working now. हाँ, अभी डॉलर, वन सेकेंड, वी विल बी यूजिंग डॉलर C $5, no not 5, 3, 3. B $3, and comma dollar B only, अप टू कहां तक जाएगा ये 12, 0 in the ascending order. So this, what I got it here, the rank of average of the column B, I got it. Is it clear? ये वाला अप्रोच यूज कर रही हूं मैं, हर एक का अलग अलग कॉलम बनते जाएगा ये ऐसे. द सेम थिंग वी विल बी हैविंग फॉर द C. मतलब ये
मेरा सोशल मीडिया पे स्पेंड करा हुआ और कस्टमर, ये दोनों पैरामीटर्स पे मैं ये अलग अलग निकालूंगी। आप समझ रहे हो क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे? Ma'am, can you just show the formula once again? क्या? So I got it rank actually. Okay, so this I will just make it as a rank. Okay, so this is a rank of S variable, that is the spending variable. Okay, spend. I'll just make it a spend here. The name I am just making it a rank for the spend, and this is a rank for customer engagement. Rank of customer. ठीक है, मतलब ये और क्लियर हो जाएगा आपको। Ma'am, why the dollar sign is used here? See, dollar, what does it means? The same value with the reference. Okay, so dollar is basically used because I want the same cell should be referenced with the why we use dollar actually? Why we use dollar in the Excel? Ma'am, I know Ma'am, dollar for of the. freezing. For freezing. Not freezing, we will selecting the range actually. The range we are selecting. See, we are selecting the range ना, यहाँ से हमने यहाँ तक की range select कर ली है। Yeah, ma'am, so that they can, if any change would happen, then the range will not affect. Exactly. So that, yeah. And the rank is being calculated with the average. Try to understand, who is not able to understand dollar. Dollar का मतलब ये है कि डॉलर से हमने क्या किया है, we are selecting the range. The very first we are fixing the range. First thing. Then what we are doing, हमने इन सब का average लिया है. Try to understand this. हमने average लेके उसको individually divide करते गए हैं हम। हमने आइडियली ये किया है। Okay, ma'am. ये जो फॉर्मूला है ना, हम टुवर्ड्स दैट फॉर्मूला वी आर अप्लाइंग दिस। ओके, हमने यहाँ ये जो दोनों चीजें हैं ना, वो हम निकाल रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप। ओके, so we are having summation of x square, then we will be going with the summation of x square, x का square, separate हम निकालेंगे इसमें। Same with the average we will be calculating with this, sorry, rank we will be calculating for the customer। बस ये रहेगा, यहाँ पे आपको ये range fix करनी पड़ेगी। Okay, you have to fill this basically selection for the customer, so do it fast। Ma'am, what is the benefit of using this formula over that data analysis option? See, अगर मेरे से आप पूछोगे तो डेटा एनालिस्ट को ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट के पास तो डेटा एनालिसिस टूल है ना, ये टूल पैक है ना। मैं आपको तरीका बता रही हूँ ये वाले मेथड से जाने का। दिस इज वन ऑफ द क्या कह सकते हैं, दैट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड वी कैन इम्प्लीमेंट यूजिंग एक्सेल। अगर किसी को स्टैटिस्टिकल मेथड के अप्रोच से करना है, then they have to go with the rank, they have to go with the correl function। whereas अगर कोई डेटा एनालिस्ट है, उसको ये सब करना ही नहीं है, उसके पास ऑलरेडी this approach is given na, this approach is given from the data analysis tool pack only। is it clear? Yes, ma'am, exactly. दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है डेटा एनालिसिस टूल पैक से निकाल लो, दूसरा तरीका ये है कि पहले रैंक निकालो, फिर उसके ऊपर कोरेल फंक्शन अप्लाई करो, और फिर ये कोरिलेशन का कोएफिशिएंट निकालो। दोनों तरीके से आपको आउटपुट सेम ही मिलने वाला है। देयर विल बी नो चेंज इन द आउटपुट, समवेयर डेसिमल वैल्यू हियर एंड देयर मे चेंज, but remaining maximum major part of your value will be remain same। it will be 0.7082 आएगा 83 के जगह पे। that's it, there is no change। okay, I am just showing you the approach or a method to use it। क्योंकि देखो दोनों तरीके हैं, एक है हमारे पास डेटा एनालिसिस पैक जो हमने ऑलरेडी यूज किया है, जो ऑलरेडी है हमारे पास और जिसका हमने यूज करके पहला वाला काम निकाल लिया है। ओके, और दूसरा है कोरेल फंक्शन।
तो कोरेल फंक्शन डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है वैल्यूज पे, कोरेल फंक्शन ऑलवेज अप्लाई ऑन द रैंक। तो हमने सबसे पहले रैंक निकालना है एंड रैंक के ऊपर हमको अप्लाई करना है कोरेल। अभी क्लियर हुआ आपको? यस मैम। ओके अब अगर हम कोरेल के लिए यहाँ पे सेम सेम चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट हियर कैसे यूज करेंगे। आई जस्ट यूजिंग अ रैंक डॉट एवीजे। क्या डालेंगे, चलो फटाफट बताओ, आप ही लोग बताओ, क्यों क्विकली बताओ। सी सी C3. C3. सॉरी सी थ्री, सॉरी सी थ्री। C3. Yeah. हाँ सी थ्री And C3 to C12 डॉलर है ना। with dollar. Yeah. सी क्या लूंगी मैं? C $3. हाँ और सी डॉलर और फिर थ्री है ना। Yes, ma'am. और आगे Then dollar C thing सी and 12. डॉलर 12 12. राइट। द रेंज इज बिंग फिक्स्ड। रेफरेंस डालूंगी 0। Yes, ma'am. इसको ड्रैग कर लिया मैंने यहाँ पे, ये मुझे रैंक्स आ गए सारे। ओके अब मैं कोरेल फंक्शन अप्लाई करूंगी। सो कोरेल फंक्शन ये तरीके में यहाँ से कहीं तो हटा के यहाँ पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं कोरेल फंक्शन यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ठीक है। आई एम यूजिंग अ कोरेल फंक्शन फॉर द कोएफिशिएंट। सो कोरिलेशन के लिए कोरिलेशन यूजिंग कोरेल फंक्शन, यहाँ पे मैं कहीं तो कोरेल फंक्शन लगा रही हूँ। ओके हाउ आई एम गोइंग टू यूज कोरेल फंक्शन, सो whichever be the I am just want, अब ये दोनों के ऊपर मैं कोरेल फंक्शन लगा रही हूँ। सो how I am going to use कोरेल, is it clear? कोरेल, now कोरेल में दो arrays जाएंगी। what are the arrays I am passing here? I'll be selecting this, okay, so I am selecting this and this। नो 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 ऐसे नहीं सिलेक्ट करेंगे, आई एम सो सॉरी, आई एम ऐसे नहीं सिलेक्ट करेंगे। I'll be just using कोरेल। ओके सी आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, हाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही लिखना है। मेरा ये शॉर्टकट तरीका है, इसलिए मैं जहां जिस सेल पे मुझे आउटपुट चाहिए मैं वही यूज कर रही हूँ। यू कैन राइट इट डाउन इन द फंक्शन बेसिकली बार ऑल्सो। दिस इज वन, ओके, कॉमा, एंड दिस इज सेकेंड। इज इट क्लियर? ब्रैकेट क्लोज। आई हैड एंटर्ड, what value I got it? 0.613985। ये भी कोएफिशिएंट ही है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही है, बट इट इज 0.6, whereas from the data analytics I got it 0.70। ओके दोनों पॉजिटिव ही आ रहे, एकदम से कोई चेंज नहीं हो गया कि एकदम से नेगेटिव आ गया, बट लिटिल बिट चेंजेस हियर। ओके तो हर एक का अलग अलग तरीका है, लाइक समटाइम पीपल यूज कोरेल फंक्शन, समटाइम पीपल यूज data analysis tool pack। Okay, is this Okay, clear? ma'am. Yes, ma'am. Now, there is another sorry, there are two more ways। Okay, what are the two another ways? The third way is already आपका rank निकल चुका है। Okay, so this rank I am just highlighting। Okay, this rank is already done। Okay, based on this rank ये दो तरीके हुए। Step number 1 हमने क्या देखा? This is with the help of tool pack, right? ये tool pack से निकाला है ना। दूसरा ये step 2 यूजिंग कोरेल फंक्शन है ना। एक स्टेप 3 है, स्टेप 3 इन द सेंस मेथड 3। हाँ ये स्टेप नहीं लिखना है मुझे, सॉरी आई एम सो सॉरी। मेथड 3 ये एक मेथड हुआ। मेथड 3 है स्कैटर्ड ग्राफ से, यूजिंग स्कैटर्ड ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से भी हम देख सकते हैं ना। देर आर 2-3 ways to evaluate basically correlation, right? आपको ये स्टार्टिंग में बताया ना मैंने, एक ग्राफ यहाँ पे ये देखो दिखाई दिया क्या? सॉरी ये वाला, राइट ये ग्राफ से भी हम आइडेंटिफाई करें ना, कोरिलेटेड है, नहीं रिलेटेड है, निगेटिवली रिलेटेड है।
तो ग्राफ से भी हम कर सकते हैं। तो ग्राफ से करने के लिए वी विल ओके 7-5 हो गए, ठीक है, ये हम देखेंगे मे बी इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, सो यूजिंग ग्राफ इज अनदर मेथड, and then there is another one more method. What is that method? That is your detailed way of your correlation finding. Okay, ये तरीका, इससे टेबल बनाएंगे, अलग अलग ये कैलकुलेट करेंगे एंड करेंगे। दिस इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, दिस इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। मैंने आपको उसके पीछे का लॉजिक बताया कि कैसे कैलकुलेट होता है, मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स से करना ऐसे नहीं बोला है। दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द डेटा एनालिस्ट, बट ये एक तरीका होता है। वी विल बी प्रेफरिंग 1, 2 एंड मैक्सिमम 3। ओके, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Definitely. ma'am. Because if we will use such, definitely we will not have one or two, three or four data. There will be used a Exactly. number So of we data. will We not, can't. yeah, exactly. we We can't. are not dealing with like only 10 datas or say 8 datas. Okay, we are not a basically a statistical researcher. Okay, we are a data analyst. So we are going forward for the tools utilizations. That is what is needed. क्योंकि हमारा data set हजारों का रहेगा, right? So we Yes, will ma'am. definitely go with the method 1 only. वही दिया हुआ है data analysis के लिए. Okay, even second is also not that much recommended, but तरीका होता है, इसलिए मैंने आपको explain किया है. Okay, Yes, ma'am. fine. ग्राफ हम quickly नेक्सिस में देखेंगे and relation देखेंगे नेक्सिस में. Okay, I hope you understood what exactly it is. Okay. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, can you share this Excel file? Sure. One second, ये मैंने ना read only खोल लिया था. I just save as करके मैं देती हूँ आपको. ओके, ये आपको शेयर कर रही हूँ मैं, चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ. Please check whether you received or not. मिल गया आपको? No, ma'am. No, ma'am. Kindly check now. Yes, now. Okay, perfectly fine. So you just refer those things because उसमें already 2-3 और है analysis, वो आपको करते नहीं आएंगे. Okay, don't refer those other analysis in the other sheet. Just refer the sheet which we had used for the basically social media investment, basically spending money on the social media promotions and कस्टमर एंगेजमेंट. बस वही डेटा सेट पे आप उसके ऊपर ही वर्क करो और एनालिसिस करना. दूसरे पे जाके कुछ करना भी मत, नहीं तो वो आपको समझ में नहीं आएगा. दैट वी हैड yet to discuss. Okay. Okay, ma'am. Fine. Thank you so much, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Yes, Bye, yes, yes. ma'am. Bye. Ma'am, during last class, have you shared any file? I don't remember. I had not shared as such anything. Okay, ma'am, thank you. Because at the end, I was actually busy in somewhere else. I mean, it was very important. So I was only listening you, but I Okay. couldn't see my screen. So Okay. I'm not actually shared anything in the last session. Last session I just started with the mean mode median only. So I had not shared anything. I had explained everything on the Excel only. yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Yeah. Okay. Bye.